Shalom and welcome to another Petakamor podcast from Bei Abedan, teaching Noahide Judaism for Messianic Noahides. Today we're going to be talking about Hinduism. I have in the studio with me my friend Shalom is here to help translate into Hindi. Shalom, thank you for coming along. Thank you, brother, for having me. It's very good for Shalom. you to join us. So we're going to try and explain Hinduism. This is for the audience out there who are interested in the Noahide faith from India mostly, I suppose, but you could be anywhere in the world if you're interested in Hinduism. The first thing we're going to talk about is the historicity of Hinduism. So if you can translate that introduction for me, brother, that would be great. Yes, sure, brother. So, नमस्कार सारे भाई और बहनों. आज हम बात करने वाले हिंदुइज्म को लेके. सो जो कोई भी इंडिया से है या जो कोई भी इंटरेस्टेड है, ये हिंदुइज्म के बारे में हम जो बात करेंगे, हिंदुइज्म से रिलेटेड सारी चीज़ों को. सो आशा करता हूँ आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ों को. Yes. Thank you. All right, so the historicity. So I'm going to put something up on the screen to help explain and follow. So what we're looking at now, what we're looking at is the Yuga cycle. So the Yuga cycle is a total of 4,320,000 years, and this is a fundamental principle of Hinduism. And we currently live in the Kali cycle. That's where we are right now, which began about 6,000 years ago. Yeah. So इस वक्त हम इस समय में हम कली युगा में हैं, जो कि 6000 साल पहले शुरू हुआ. सो कली युगा में मतलब पाप और ये सारी चीजें ज्यादा रहती है. सो हम इस वक्त यहाँ पे है और हर एक युगा 43 lakhs years के होते हैं एक युग. तो इस वक्त हम काली युगा में. Right. And so the Kali Yuga, as far as I understand, has got another about 400,000 years to go. So we're quite early on in the Kali Yuga. And so if we take the Kali Yuga away from this Yuga cycle, most of it, except for the last 3,000 years, we end up with a number closer to 3 million years rather than 4,320,000 years, but maybe 3.5 million years. Is really where what we're talking about for the entire cycle. Now, 3.5 million years, roughly, is about as long as the history of human-like creatures on the planet Earth. Yeah. So अगर हम कलियुगा के 6000 साल जब से शुरू हुआ उसको ऑलमोस्ट अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास कलियुग के साल और उसके पहले भी जो थोड़े साल को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास 30 लाख साल बचते हैं. तो 30 लाख साल जो है 3 मिलियन, तो वहां पे से जो ह्यूमन लाइक मतलब इंसान के स्वरूप में दिखने वाला जो सृष्टि है, क्रिएशन शुरू हुई थी. ऐसे भाई का मानना है. And at first, people might think that there's no reconciliation between the biblical faith and this sort of Kali Yuga cycle, or not this Yuga cycle. They might think there's no reconciliation because the Yuga cycle is millions of years old, and you might have heard that the biblical faith teaches that the world is only about 6,000 years old. But that's not exactly true, and I'm going to explain about that as we go along today. और आप ऐसा सोच सकते हैं कि इन दोनों में किस हिसाब से ये बहुत अलग है करके, कि बाइबल में जो दुनिया के बारे में लिखा गया है, अर्थ के बारे में, धरती के बारे में, वो तो सिर्फ 6000 साल पहले शुरू हुई. और हमारा जो हिंदुइज्म होगा वो उसमें तो लाखों सालों की बात हो रही है, लाखों करोड़ों साल पहले. बट ऐसा इसको हम कैसे बैलेंस में लाए, आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट
है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अर्थ है, धरती सिर्फ 7,000 6,000 साल पहले ही खत्म हुई। भाई जो भी एविडेंसेस या जो भी बताएंगे अभी थियरी, वो बताएगी कि कैसे क्रिएशन और पुराना है, 7,000 साल पहले पुराना, उससे भी पुराना है, लाखों साल पुराना है। तो उसको हम बैलेंस में लाएंगे, उसको हम साथ में जोड़ेंगे, कनेक्शन से बात करेंगे भाई। Very briefly, I will summarize that the biblical religion is essentially the religion you need in order to survive the Kali Yuga. ओके, सो बहुत ही संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको सरवाइव करना है कलियुगा में, तो बिब्लिकल फेथ, जो बाइबल का विश्वास है, उसे आपको आपको वो चाहिए, वो आपको ग्रहण करना चाहिए अगर आपको कलियुगा में सरवाइव करना है, कलियुगा में अच्छे से जीना है तो। All right. So, human-like creatures have existed on the planet for the entire Yuga cycle. But the human-like creatures are this kind of creature that we're talking about. It's called Homo habilis. ओके, तो ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये होमो हैबिलिस है, जो ऐसे ह्यूमन लाइक, ओके, इंसान के स्वरूप में दिखने वाले क्रिएचर्स पहले भी एग्जिस्ट, बहुत टाइम पहले से भी एग्जिस्ट करते हैं। सो ये आपके सामने है होमो हैबिलिस। And in fact, there was a time when humans didn't exist, and these creatures ruled the world. They were the dominant species on the planet. ओके, सो दुनिया में एक समय था जब भी ह्यूमंस, जो आज हम नहीं थे पहले, तो पहले दुनिया में इस धरती पे ऐसे जो होमो हैबिलिस जैसे क्रिएचर्स है, ओके, जो ह्यूमन लाइक है, इंसान के स्वरूप जैसे है, लेकिन इंसान नहीं है कंप्लीटली, ऐसे ऐसे से पूरी दुनिया भरी हुई थी पहले। या So you could say that this was their world until humans came along. या या सो हम इंसानों के आने के पहले ये दुनिया जो थी उनकी थी। But then humans came along and we kind of upset their world. We upset their world. We really spoiled the way things were. Here is a little picture to explain our relationship between us humans and these other creatures. So these, सो ये yeah, हमारे या go on, yeah. सो हमारे आने के पहले ये लोग थे होमो हैबिलिस, और हम आने के बाद, ये दुनिया में आने के बाद थोड़ा सा हमने डिसबैलेंस ला दिया उन उन उनमें और हमारे में। तो ये जो चार्ट अभी आप देख सकते हैं, ये है पूरे जो एक हिसाब से जो जो रेंज है कि पूरे एक हिसाब से कजिन्स है जो इंसानों के, बट ये दे वर नॉट एग्जैक्टली, वो पूरी तरह से ह्यूमंस नहीं थे हमारी तरह, लेकिन ऐसे वो कजिन्स बोल सकते हैं, हम दूर के कजिन्स कह सकते हैं। यस, Cousins. And you can see on this, what we have here is a tree. And the tree is coming down and splitting into two groups. And on the bottom group, it says Ergaster, Erectus, Antecessor, Heidelbergensis, Neanderthalis, and Sapiens. That's where we are. We're in this group. And the cousin group is Habilis and Rudolfensis. सो जो सेपियंस दिख रहा है वो नीचे सबसे वो हम हैं, और हमारे जो नियनडर्थलेंसिस और ये सारे जो हाइडलबर्गेंसिस ये सब हैं। और उसके दूसरे ओर पे, दूसरे छोर पे अगर आप देखोगे तो होमो हैबिलिस और रुडोल्फेंसिस दो अलग है, वो वहाँ से अलग होता है। सो दीज ह्यूमन लाइक जो क्रिएचर्स, वो होमो हैबिलिस हुई हमसे, जो कजिन्स जो हमारे जैसे दिखने वाले, लेकिन एग्जैक्टली नॉट अस, हम नहीं थे एग्जैक्टली वैसे। तो वो उनके बारे में भाई और आगे बताएंगे। या Yeah, and I've actually heard the explanation that really the human group is really from Homo erectus in the antecessor, Heidelbergensis, and Neanderthalis and Sapiens. That as a species, we really could only mate with each other in this small group under here, whereas we could not mate with Habilis and Rudolfensis and Ergaster and Erectus
some other erectors because there's too much difference between us and them, like the same sort of difference between a donkey and a horse. ओके या सो जो होमोसेपियंस हम हैं और निएंडरथल और ये हाइडेलबर्गेंसिस और एंटेसेसर उन वो जो हम हमारे जैसे लोग सो उनमें संभोग कर सकते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होके हमारे किड्स बच्चे ऐसा हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरी छोड़ है वहाँ की दूसरे छोड़ में जो हबिलिस और रोडोल्फेंसिस है वो एग्जैक्टली हमारे जैसे नहीं है, तो उनका बायोलॉजिकल और वो सब अलग है काफी, तो उनमें संभोग करके नहीं हो सकते थे बच्चे, और वो ऐसे ही डिफरेंस है जैसे कि ये घोड़े में और गधे में होता है. So they're really a different species. I mean, if you can mate a horse and a donkey, but the result is a mule, which is usually sterile. In the same situation, if humans were to mate with habilis, then the result would be something like a mule, a sterile creature, which may is a mixture, is a hybrid, but is not likely to be able to continue breeding by itself. या सो अगर हम घोड़े और गधे में कर भी दें अगर संभोग उसमें, तो उसमें ऐसा होता है कि वो खच्चर जैसा आता है, सो नॉट एग्जैक्टली वो पूरी तरह से डोंकी या तो, बट दोनों का एक मिक्सचर है, उसे हम खच्चर कहते हैं या हिंदी में इंडिया में, सो अलग होता है काफी, तो वैसा होगा. I'm not entirely. I'm not a biologist, but I think that the chances of a mule being able to reproduce are very, very small. Not impossible, but very small. यस, और वो खच्चर कभी वापस से वो रिप्रोड्यूस कर पाए बहुत ज्यादा कम होते हैं वो, क्योंकि अगर घोड़े और गधे में करा भी दे हम संभोग और उसको एक खच्चर पैदा हो, तो खच्चर की लिनिएज उसका वो खच्चर का बच्चे पैदा होना बहुत ही चांसेस कम है, बहुत चांस. मैं कोई बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे पता है कि चांसेस बहुत कम होते हैं. So let's just have a look at the other kinds of pre-human, and we have this example here, which is Rudolfensis. Again, it looks more like an ape than a human, just like the habilis looks more like an ape than a human. This one is called Rudolfensis. तो ये जो आप देख पा रहे वो है रूडोल्फेंसिस, और ये इंसान तो कम लग रहा है लेकिन एक बंदर जैसा ज्यादा दिख रहा है, तो यही है वो रूडोल्फेंसिस जो हमारे पहले पहले थे. And then we'll look at another one as well. Ergaster, this one. They have the skull of the Ergaster here. It's a bit too different from human being, but that's a reconstruction of what they think the Ergaster looked like. एक और है होमो एर्गास्टर, सो ये उसका है, तो और ही दूर लग रहा है इंसानों से, सो ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने एस्टिमेट किया कि ऐसा दिखता होगा. All right, then. So the reason I'm talking about all of this is because I want to talk about Hanuman. And Hanuman existed 2.5 million years ago, according to the Hindu stories. सो ये सारी चीजों का तात्पर्य मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ, ये इसी कारणवश है क्योंकि मुझे हनुमान के बारे में बात करना है. और हनुमान का अगर आप देखोगे वो 2.59 सो मिलियन इयर्स पहले उनका एग्जिस्टेंस जाता है, सो आई थिंक ऑलमोस्ट 30 लाख साल पहले, 2,60,000 साल. And Hanuman really is existing at the same time as these human cousins existed, we can call them. Yeah, they existed about the same time. यस, सो हनुमान और उनके जो हमारे ह्यूमन कजन्स, सो वो ये जो ह्यूमन कजन्स हमारे है हबिलिस होमो हबिलिस, ये टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, 20 लाख, सॉरी 2.59, या सो 20 लाख साल पहले.
Another story which is interesting, because of course the reason why Hanuman is important, because our Hindu audience will recognize that Hanuman is a deva, is what we call a god, and is also looks like an ape, looks like these creatures. So I think there's a historical truth that Hanuman lived, and Hanuman was some kind of ape-like creature which existed 2.5 million years ago. I think that's true. But the idea of calling him a god, well, I won't disagree that he was a deva, but I wouldn't say that he was worthy of worship. So basically मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये कि जो हनुमान है, जो 20-30 लाख साल पहले एग्जिस्ट करते थे, तो हिंदुइज्म में जो होता है उन्हें एक देवा का रूप कहते हैं, लाइक एक एक गॉड, लाइक अ डेमी गॉड टाइप, कि हम उसे लोग हिंदू लोग जो हिंदू पीपल है, जो वो लोग उसे पूजते हैं. सो ये एग्जिस्ट करता था, इसे एक हिसाब से गॉड भी कहते थे, लाइक अ गॉड उसमें थोड़ी एबिलिटीज और पावर्स. लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि नॉट ये पूरी तरह से क्या ये वर्शिप जो है, ओके, उसके उसके लिए ये वर्थ है क्या, कि क्या हमें इसे इसे इसकी आराधना करनी चाहिए, ये हनुमान, ये जो मंकी जो एक स्पीशीज है जो पावरफुल है, क्या हमें उसकी आराधना करनी चाहिए? So yes, I think he existed. Yes, I think he existed almost maybe 2.5 million years ago. Yes, I think he was an ape-like human. And I accept that, sure, there are many people who worship him as a god, but I don't think you should be worshipping him as a god. He is more like a distant ancestral cousin or uncle than a god. You shouldn't be worshipping him as a god. यस. सो बेसिकली मैं मानता हूँ कि वो पहले था, एग्जिस्ट करता था. मैं मानता हूँ कि 20-30 साल पहले वो था, वो ह्यूमन जैसा, मानव जैसा शरीर रखता था, बट वो फिर भी एक वानर जैसा ही था, उसमें ताकत होगी. यस, ये सारी चीजें मानता हूँ, बट वो इसके जो आराधना है, क्या उसके उसके लिए वो वर्दी है, उसके लिए नॉट वर्दी, Not worthy. उसके लिए वो काबिल नहीं है, बिकॉज या वो योग्य नहीं है उस चीज के, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक बीइंग था. वो ये क्या कहते हैं हमें, एक इंसान के जैसा, बट खुदा नहीं है. वो इंसान के जैसा था, उसमें ताकत थी, लाइक अ डेमी गॉड वैसा. Yeah, I don't think so. And let's just put a picture of Hanuman up here just so that other people can understand what we're talking about. I'll get a picture here. So this is what we're talking about here. Like monkey magic, essentially. In the Chinese stories, they refer to him as monkey, the king of the monkeys, if you like. And sure, maybe he was very powerful. And I'm not even going to say that the stories about him are false. Maybe the stories are based on truth. Maybe there is some record, some oral history, 3 million years old or 2 million year old oral history passed on in stories for millions of years from our ancestral cousins, and then onto Homo sapiens. We remember the stories too. Maybe all of that is true, but he shouldn't be worshipped by Homo sapiens. If you're a monkey, then maybe you should worship him because he was a mighty monkey. But for a human, I don't think it's worth worshipping him. सो ये जो सारी चीजें है कि ये जो भी ये टाइम पे 20-30 लाख साल पहले, जो कि वो टाइम पे वो था, एग्जिस्ट करता था, लेकिन आज हम वो उसके योग्य नहीं है कि आप एक इंसान जो 20 लाख साल वर्ष पहले उसका अस्तित्व था,
और कि आप उसके आगे झुके और उसकी आराधना आराधना करें। बिल्कुल वो ताकतवर हो सकता है, वो टाइम पे ताकतवर था, उसने उसके पास ताकत थी, उसके पास ये कुछ ये सारी चीजें रही होगी, लेकिन वो आराधना के योग्य नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि वो अ, एक बंदर बंदर जाति इंसान जैसा दिखने वाली बंदर जाति की का स्पीशीज का हिस्सा था वो। Yeah, definitely the mightiest of all monkeys. But look, we are humans, Yes, and वो प्रजाति। uh, yeah, not something that not something for us to be focused on. But interesting stories. I think they are interesting stories, and we can we don't have to throw these stories away and say that there's no truth in them. I think there's possibly some truth in it. सो ये सारी बहुत आश्चर्यचकित बातें, हम देखिए हम है इंसान, हमें इन चीज़ में इतना ज़्यादा ये करने की ज़रूरत तो है नहीं, बट ये काफ़ी आश्चर्यचकित चीज़ें हैं कि 20-30 लाख वर्ष पहले भी हमारे जैसा एक एक हमारी जैसा इंसान के जैसा, फिर भी इंसान नहीं है वो, फिर भी लेकिन इंसान के जैसा शरीर है लेकिन वानर जैसा है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है। This should not be your God. ये This तुम्हारा should खुदा। be your ancient history. For a monkey, it's a god, but for us, it's very primitive. यस, तो ये ये आपका खुदा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये जब बहुत ही पुरानी, मतलब ये वानर जैसा चीज़ें कैसे खुदा हो सकता है? बहुत ही ये सब पुरानी चीज़ें हैं, एकदम ज़्यादा ही। Another story which we should probably talk about is the story of Rama, who built the bridge, and the monkeys who helped him. If Rama could speak with monkeys, and the monkeys helped Rama build the bridge, doesn't that mean that Rama was also one of them? It should be the same, सो just like अगर Hanuman. या सो उनका कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अगर राम जो है, ओके, वो वानरों से बातें करते थे, तो क्या वो भी उन्हीं की तरह के प्रजाति से हो सकते हैं? क्योंकि वो उनसे बातें करते थे, उनसे काम भी उन्होंने उनके लिए काम किया, जो भी सारे वानरों की सेना थी उन्होंने राम के लिए काम किया। तो क्या वो सब एक ही तरह के लोग हो सकते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं? So again, I'm not saying it's not true. I'm saying it's possibly a very interesting record of some story which happened very, very long time ago, in the time of our distant ancestral uncles. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब झूठ है करके, कि ये सब था ही नहीं, क्योंकि ये सारी प्राचीन चीजें हैं तो ये सब था ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये प्राचीन चीजें थी, ये हुई है सच में। ये हमारे हमारे एक चाचा या अंकल कह सकते हैं, जो दूर के, क्योंकि इंसान के जैसा शरीर है लेकिन पूरी तरह से इंसान नहीं है, परवाना जैसे दिखते हैं। तो ये हमारे लीनिएज में या एक तरीके से दूर के कजिन हो सकते हैं, जो अब नहीं है, अब एक्सटेंट हो चुके, क्योंकि अब हम सारे इंसान ही हैं सिर्फ, आजू बाजू हर जगह। तो या Now, I'm going to just talk a little bit about the biblical story. अब मैं कुछ बिब्लिकल स्टोरीज के ऊपर बात करूंगा, We बाइबल की understand कहानियों पर। that. Sorry, we understand that the the that something called the Garden of Eden, the paradise, existed. A perfect society throughout the galaxy existed a long time ago, for millions of years, and before human beings started to come to this planet and built civilization, human civilization on this planet.
सो हमारा बाइबल के हिसाब से ये मानना है कि हम बहुत समय पहले हम गार ईडन की वाटिका में थे, और उस वाटिका में उस हजारों लाखों सालों से उस आकाश गंगा में हम अच्छे से और शांति से हम पहले से रह रहे थे, जब हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे धरती पे आना चाहते हैं। The Garden of Eden is essentially. Let me show you a picture to help explain. The Garden of Eden that we talk about in the Bible is essentially the galaxy that we live in, the Milky Way galaxy we live in. The Garden of Eden has got various rivers which go around the galaxy, and these rivers are the arms of the Milky Way. Our ancient Jewish sages used to point to the Milky Way galaxy in the sky at night, and they used to say that this is the river of Eden in the sky, and we draw our power from the river of Eden to try and make the world that we live on now a better place. सो हम जो हमारे जूविश, जो हमारे यहूदी यहूदी अ, जो सेजेस थे, जो सेजेस थे उन्होंने रात में, मतलब उन्होंने ये देखा कि जो गैलेक्सी है, जो ऋषि ऋषि थे, जो संत थे यहूदियों के, उन्होंने देखा कि जो ये गैलेक्सी है, जो आकाशगंगा में बहुत दूर जहाँ पे ईडन की वाटिका है, तो वहां से एक एक गंगा एक 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 गंगा बहती है, रिवर, जो कि वहां से हमें हमें ताकत उच्चार करनी है, वहां से हमें ताकत लेनी है कि हम इस दुनिया में हमारा जीवन बिता सके, क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा के लिए नहीं है। हम यहाँ पे थोड़े समय रहना है, बट हमारा घर, हम ईडन की वाटिका से आए हैं हम। Because in the sky at night, the Milky Way looks a bit like a silvery stream which goes through the sky at night. I'll show you a picture of it to try and help explain. So I have a picture. I have some pictures here. Let me just get the nice one up on the screen here. This is a nice one here. Okay. Share this one. So it looks like a kind of a silvery stream of stars going through the sky at night, and that's why we call it the river. We call it a river of Eden. I don't know what you call it. I think in Hindu tradition it's also called a river of milk, isn't it? Am I correct? No, I don't have much idea about if it is called river of Okay. milk or not. I'll have Okay. to check it. Well, we call it the river of Eden because we think it's the river, the heavenly river which goes through the sky. So that's what the river of Eden is. You can explain that to them. Oh, in our Hinduism we call it it's a sagara, Shira Sagara. So it's just the same. The same. It's like, but it can be seen also above the Himalayas, kind of. So they call it Shira Sagara. So it's like, it's called ocean of milk. Ocean of milk, right. So we call it the river of Eden, Yeah. and in English they call it the Milky Way. So हम इसे, जो आपको लाइन दिख रही है, उससे हम कहते हैं जो रिवर, जो गंगा है, आडन की गंगा गंगा हम उसे कहते हैं, वो लाइन, तो ये हमारे तरफ आ रही है ऐसा। And this is where we draw our power to change the world and make it a better place. It's the river which goes around the garden. So the galaxy is the garden, and the trees in the garden are our solar systems, our planets. ओके। सो ये जो रिवर है, ये जो गंगा है, उससे हम अपनी ताकत, उससे हम ताकत हम लेते हैं, ताकि दुनिया को हम, ये जो धरती है उसे हम चेंज कर सके, उसे बेहतर बनाने में, उसे हम हील कर सके, चंगाई हो सके दुनिया में। तो यहाँ से हम ताकत लेते हैं इन चीजों के, क्योंकि जो 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 गंगा है वो आदन की वाटिका से निकलती है, वैसा वैसा हमारा मानना है। Right.
Okay, so this planet that we live on is one of the trees of the Garden of Eden. And this particular planet, this tree is called the tree of knowledge of good and evil. ओके, सो ये जो दुनिया है, ये तो एक एक जो गार्डन, जो वाटिका है, आदन की वाटिका में बहुत सारे पेड़ हैं। तो उनमें से एक पेड़ है जो कि वो हमारी दुनिया है, जो हमारी हमारी धरती है। तो ये जो पेड़ है वो ट्री ऑफ गुड एंड इविल। तो ये पेड़ अच्छे और बुरे का पेड़ है ये। This concept exists in various religions, even in the Nordic religion. They have the idea of this tree being like a kind of a solar system with the planet Earth and all the other planets and worlds of various gods in this tree. So it's not something which is unique to Judaism to talk about this planet as a tree of knowledge of good and evil, but this is an idea which exists in various religions around the world. सो ये जो आपको दिख रहा है पेड़, जहाँ पे ये गैलेक्सी है, हमारी आकाशगंगा में धरती भी है और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे दुनिया है, बहुत सारी दुनिया जो बहुत सारे गॉड्स की या ऐसा जो कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहूदा रिलीजन में ही है, यहूदा धर्म में ही है, बट यहूदा धर्म के अलावा बहुत सारे धर्म में है। नॉर्डिक रिलीजन्स जो हमें नॉर्थ के वाइकिंग्स लोगों के रिलीजन में भी ये पाया जाता है, ये सारी चीज़ें। Yeah. And even in the Viking religion, they also have this tradition of this serpent being around the tree, which is another element of our story too, of the Hebrew story as well. There was a serpent which rules the tree, which we are now living on. सो जैसे ही वाइकिंग के ट्रेडिशंस में भी एक सरपंट होता है, सांप होता है, तो वैसे ही हमारे यहूदा धर्म में भी हमारे यहूदा धर्म में भी अब सांप का डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बताया गया है, ये चीजों को लेके। And I understand that in Hinduism there is also a serpent which is an important ruler. Am I wrong? Uh, Shalom, have I? Yep. Yeah, brother. There is a serpent, a snake, but it's tied around the neck of Shiva. So Aha. Mhm. it's not, but not exactly. It's not exactly portrayed as a ominous, but it is also kind of worshipped. The Worship. serpent is worshipped as well in yeah, Yep. because we have something called as Nag Panchami. On that Mhm. day, they have the Hindus. What they do is they take a bowl of milk and try to give it to the serpent, the cobra. I see. So what we're seeing in the Hindu religion is the deification of creatures which lived on this tree or belonged to this tree before humans came. It deifies the serpent. It deifies the kind of humans who existed here, the pre-humans that existed here beforehand. And the interesting thing is that they use the word deva for these creatures. These are all devas. Now, I think you should translate that before I say what comes next. सो हम ऐसा देख सकते हैं कि हो क्या रहा है कि हम उन दैवीकरण कर रहे हैं, हम उनका डेफिकेशन। तो क्या हो रहा है कि हम इनको देवा बना रहे हैं, इनको हम लाइक खुदा की जगह देने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सांप हो या बंदर हो, तो हम उनको उठा रहे हैं, जो हमारे ये सारी चीजें हमारे पहले थी, इंसानों की धरती पे आने के पहले पहले था ये सब। तो हम आए और हमने फिर देखा ये सब है, तो हम इन्हीं को पूजने लग गए इंसान। And यस, am I correct that there were some kind of reptilian creatures as well, which were in Hinduism? Am I correct? the reptilian creatures being worshipped. Yes. Am I correct? Yeah, there are, I mean, these devas or devis, the Hmm. goddesses. There are Hmm. many goddesses who use a tiger as their
means of transportation, sort of. It's like if you type in Devi, then you will see that sometimes they are seated on a tiger, sometimes over standing over a crocodile, sometimes all these things. So Uh, they are and they seating over. were reptilian. Who? The goddesses. Yes, It is sort of mix actually. Some are a like mix. Yes. humans, and some are, yeah, mixed, as in, like, uh, but if you see, there is Ganesha, like a reptilian in a sense, because he has elephant's head Hmm. over the Like a body of a serpentine. human. Hmm. And yeah, the same, there are many other like Ganesha. And others like Ganesh as well. Some weird looking creatures. Okay, so the word deva. Let's talk Yes, about yes. the word deva. So the word deva is related etymologically to other Indo-European words. And in Mhm. Hindu culture and in Greek culture, these devas are good. They have the word deus, actually comes from this as well. Deus is the Greek version of devas in Hindi. And for the Greeks and for that's the pagan Greeks, and for the Hindus, devas are good. But when you look at other Indo-European cultures, like Iranian language and the Nordic languages, other European languages, the word deva is equivalent to the word devil. Divs, and divs are bad in among these other uh, Indo-European families. And so what we see is there's a kind of a split among the ancient Indo-European people, where like half of them decided that devas are good, and the other half decided that devas are bad. And um, Yes. I'm going to Like explain. a chasm is like a split between the both, right? Yeah, there was a split, One and calling other the enemy and the other doing the same, yeah. in a sense. So there was a split in the early Indo-Europeans. I'm going to try and explain where the split came from, why some of the early Indo-Europeans say they're bad, and why others say they are good. So if you can explain that, that's all for now, and I'll translate. We'll translate a little bit more later. श्योर. सो कैसा होता है कि हमारे हिंदुइज्म में अगर हम देखें तो देवा जो शब्द है उसे हम कहते हैं कि अच्छा है वो बहुत, और जो शब्द, लेकिन जो नॉर्डिक, ओके, जो नॉर्थ माइथोलॉजी होता है वाइकिंग्स लोगों में और यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में भी, हम वो शब्द को एक्चुअली, जो डेवा है, जो कि हम हिंदुइज्म में लोग उसे अच्छा कहते हैं, लेकिन वो इट्स वहाँ भाषा में उसे डेविल कहते हैं, या बुरा, डेविल, देवा, डेविल। सो वाइकिंग्स में और यूरोपियंस उसे ऐसा कहते हैं। और दूसरी जगह पे असुर जो है, हमारे हिंदुइज्म में हम असुर को कहते हैं कि बुरा है वो, या वो डेविलिक है, या वो असुर मतलब डिमोनिक। लेकिन यहाँ पे दूसरी कॉन्टेक्स्ट में वैसा नहीं कहा जाता। मिडल ईस्ट कॉन्टेक्स्ट में असुर, मिडल ईस्ट में ईरान और ये सब जगह पे, इराक और ये सारी जगह पे असुर का मतलब अच्छा होता है। Yes, that's right. The word Ashura is a word which is related to Ahura, which is a name for God in Persian. It's also a word related to Asir, which is the Nordic word for the gods. It's also related to a Jewish word Ashrei, which means praiseworthy, and it's also related to the name of the country of Iran today. Iran originally comes from the same root of Ahura, the land of Ahura, Iran. It's got the same root there. So some of the Indo-Europeans thought that Ashur was good and Deva was bad, and others of the Indo-Europeans
Hindus and Greeks thought that Deva was good and Ashur was bad. तो कुछ हिंदू अगर देखेंगे इंडो यूरोपियंस के जो एंसेस्टर हिंदूज और ग्रीक्स, सो उनको लगा कि जो देवा वर्ड है मींस गुड, और जो वहाँ के असुर जो अहुरा जो लैंड जो कि ईरान है, उसे लैंड ऑफ अहुरा, तो उसे वहाँ पे असुर को अच्छा बोला जाता है कि गुड। तो उनको लगा अशुर अहुर जो है लैंड ऑफ अशुरा, लैंड ऑफ अहुर, सो उसको अच्छा प्रेज वर्दी कहा जाता है। हिब्रू में भी अशेरा को प्रेज वर्दी गुड थिंग कहते हैं। तो वो सही है, और जो देवा है ओके वो गलत है, वो डेविल है। बिकॉज नॉर्स माइथोलॉजी, नॉर्स में, नॉर्डिक में और इंडो यूरोपियंस जो यूरोपियंस लोग हैं यूरोप में आज उसे बुरा कहते हैं कि देवा मतलब डेविल वैसा। And this is all to do with the origin of the Sumerian civilization, which is in a land which today we call Iraq, but in ancient times was called Assyria. सो ये सारी चीजें इस जगह को लेके है। आज हमें उस इराक कहते हैं, लेकिन वो टाइम पे वो उसे असीरिया कहा जाता था। असीरिया, अशुर, असीरिया। Ashur, Assyria, Assyria, exactly, Ashura. So that's where this comes from. Basically, it depended on whether you thought that Assyria was good or Assyria was bad. If you thought Assyria was good, then the Devas were bad. And if you thought that Assyria was bad, then the Devas were good. So it basically comes down to a political opinion at the end of the day. सो ये ऐसा था कि वो जो जगह थी अशूरा जगह, सो डिपेंड करता था कि अगर आपको लगता था अशूरा सही जगह है तो उसे सही कहा जाता था कि हाँ प्रेज वर्दी, ये अच्छी चीज है। बट अगर आपको गलत लगता था तो फिर वो सही जगह, वो सही नहीं है, तो अशुर गलत है। तो इट्स एक हिसाब से ये पॉलिटिकल राजनीतिक शब्द के हिसाब से इसे यूज किया जाता था। So the allies of Assyria, ancient Assyria, which was called Sumeria, the allies of ancient Sumeria considered Assyria, Ashur, to be good, and the enemies of ancient Sumeria considered Ashur to be bad. तो जो अशुर के जो पुराने चीनी प्राचीनी जो सुमेरी लोग थे, सुमेरी लोग, सो वो उनके मित्र कहलाते थे अशुर की, क्योंकि वो उनके साथ थे। लेकिन अगर जो उनके खिलाफ होता तो उसे उसके एनिमी घोषित किया जाता था। Right. Now, we should also talk about how old the Sumerian stories are. Now, you're going to find references to Sumerian history written by European archaeologists, which ignore the Sumerian story of how old they were themselves. Just like European historians tend to ignore the antiquity of the Hindu religion, and they say, no, there's no way that it was 3 million years old. Likewise, they also ignore the antiquity of the Sumerian religion. The Sumerian religion stories go back and say that it began about 241,000 years ago. So the Sumerian civilization is very old as well, but there's no way that any modern day Western historians are going to accept that Sumerian history is 240,000 or nearly 200,500. I should say 2,500,000 years ago. Nobody's going to accept that. But we should look at what the Sumerians have to say about themselves, because it helps make sense of the Hindu religion. सो जो ये सुमेरी का जो रिलीजन था, जो उनका धर्म था, अब वो भी 2,40,000 साल पुराना पीछे जाता है। और
कोई भी यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट हो या वो सारे लोग इन सब चीज़ों में इनको भी नहीं मानेंगे, और ना ही हिंदुइज्म का जो और पुराना है इनसे भी पहले 240 से भी पहले, ना ही उनको वो मानेंगे, ना ही दोनों को मानेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत पीछे तक जाती, बहुत पुरानी पीछे तक इनका इतिहास है। तो ये तो वो दोनों साइंटिस्ट और ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट तो सब मानने से रहे, लेकिन हम सुमेरी धर्म या उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, जो कि 2 लाख 40 साल से भी काफी उतना पुराना है। And the sort of prejudice, the European prejudice against the antiquity of Sumerian civilization and the antiquity of Hindu records is because Europeans come from a biblical religion, and the biblical religion only goes back about 7,000 years maximum. सो इनका जो इतना पक्षपात इसके वजह से है क्योंकि उन्हें सिर्फ एक हिसाब से बिब्लिकल रिलीजन से ही लगाव है। उनको इन सारी चीज़ों को पीछे नहीं देखना है, बिकॉज ये सारे लाखों लाखों वर्ष पीछे जाती है। सो यूरोपियंस को, जो यूरोपीय लोगों को उनसे इतना मतलब भी नहीं रहता है, ना ही हिंदुइज्म में कुछ पर जानना या कुछ चीज़ों को देखना, ना ही सुमेरी भी काफ़ी पुराना है, 2 लाख 40, तो इस ना ही उन दोनों में से किसी को नहीं जानना, क्योंकि हमें सिर्फ बाइबल से मतलब है, क्योंकि ये हमारा धर्म है, यूरोपीय धर्म, बाइबली धर्म जो 7,000 साल पुराना है, बस उसी से हमें मतलब है। But there's no need for that fear, because the Bible actually covers a period of time which goes way back before the 7,000 years that is usually assumed to be how old the biblical religion is. तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है वैसे इतनी, क्योंकि जो बाइबल है वो इन 7,000 साल की ही जो ये मेंटालिटी है कि 7,000 साल पुराना ही है, बिकॉज जो भी यूरोपियंस या इनका सिर्फ इतना ही मानना है। लेकिन बाइबल जो है वो उससे भी पीछे जाती है, 7,000 साल पहले उससे भी पीछे जाती है, जो लाखों वर्ष सुमेरी और ये सब चीज़ों उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे बाइबल से लेके, क्योंकि ये बहुत पीछे जाती है, लाखों वर्ष पीछे जाती है बाइबल पे, उनके बारे So में लिखा। I'm sorry. Yeah, no. So in the Bible we have 4 chapters before the 7,000 years begins, and or sometimes it's 6,000 years. Depends on which version of the Bible you use, but we have 4 chapters. We've got Genesis 1, which talks about the creation, and these days are these days are not human days. There's no way to know how long these days last. But in Hinduism, they have something called the concept of a Brahman day, a day of Brahman, for example, and that Yeah. might be closer to the kind of time we're talking about for Genesis 1. सो बाइबल में 4 चैप्टर्स है, 4 अध्याय चैप्टर्स है। तो वो चैप्टर्स है 7,000 साल पुराने, उसके 7 या 6,000 साल उसके भी पहले के अध्याय उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो जो 4 अध्याय है उसके ये 7,000 साल पहले, उसके बहुत लाखों साल, और एक दिन इंसानी जैसे कि आज 24 घंटे पूरे, वैसे दिन नहीं है ये जो एक एक दिन है, वो बहुत एक हिंदुइज्म में भी इसके बारे में व्याख्यान किया है, जो कि एक दिन ब्रह्मा का दिन, जो कि बहुत ही लंबा और बहुत ही अलग अलग दिन होता है, वो बहुत ही लंबा दिन होता है। इट्स नॉट लाइक हमारे 24 घंटे जैसा दिन नहीं है वो। Yeah, and so we've got those days of creation, and then we also have the next chapter. Chapter 2 is talking to us about essentially the Garden of Eden and humans sort of enjoying status in the galaxy before we came to this planet. That's chapter 2, and there's no time given in chapter 2 at all. We don't know how long that lasted. सो चैप्टर 2 में भी एक समय का व्याकरण नहीं है कि खुदा ने इंसान को तो बनाया है, लेकिन वो आदन की वाटिका में
और इसमें कुछ समय का कुछ व्याकरण ही नहीं दिया है। And these stories which we start to see in chapter 2 are very reminiscent, very similar to many of the stories which the Sumerian culture also preserved. So बहुत सारी जो, अगर आप जेनेसिस अध्याय में, दूसरे अध्याय और ये सब जेनेसिस में और बाइबल में जो स्टोरीज है वो बहुत सारी बहुत सिमिलर है, बहुत सेम है, जो कि सुमेरिय लोगों ने की भी पहले से लिखी हुई चीजें थी। सो बहुत सारी चीजें बहुत सेम है तो सुमेरिय और इसमें बाइबल। Mm-hmm. Especially the story about the not eating from a certain tree in heaven, and the story about the man's rib, and making woman. These stories exist in Sumerian civilization as well. ओके, सो जो ये बहुत सारी स्टोरी जो बाइबल में, जैसे कि पेड़ से ना खाने के लिए जो कहा गया था, और आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, रिब की हड्डी, वो उससे लेकर खुदा ने हवा को बनाया या औरत को बनाया। सो वो सारी चीजें बहुत सिमिलर है। Now, mankind was told not to approach or not to eat from the tree of knowledge of good and evil, which is this planet that we live on right now. And the planet had a ruler, the serpent, which is mentioned in Genesis 3. And then we have a story about interaction between humans and the serpent in Genesis 3, and there's no time given for that either. We have no idea how many thousands of years there was interaction between the humans of the galaxy and the serpent of the tree. We don't know. We have no idea how long that was going on. सो हमें ये सारी चीजें नहीं पता कि अभी इंसान जो आदम था, आदम और हवा, और इनसे बात होना, जो सांप से उससे बात होना, और ये सारी चीजें, उसका कुछ टाइम फ्रेम नहीं दिया है एक्चुअली, कितना ये कितना लंबे तक हुआ ये, और जो कि हमें खाने के लिए मना किया था उससे, फल से अच्छाई और बुराई का, जो कि हम यहाँ पे है इस दुनिया पे, जो खा के हम यहाँ पे आए, ये दुनिया ही वो नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल है। सो अच्छी चीज और बुरी चीज का ज्ञान हमने खाया वहाँ पे, तो अब हम आए यहाँ पे। But the serpent, the ruler of this tree, was punished because of his illegal interaction with our human ancestors who existed in the galaxy before we came to this planet. सो जो सांप था, जो प्राचीन सांप, उसे उसे दंड दिया गया, क्योंकि उसने जो वार्तालाप किया वो इलीगल था, वो सही नहीं, वो नहीं करना चाहिए था, इलीगल उसे कहा गया था, तो इसलिए उससे भी दंड दिया गया। और वो जो सांप है प्राचीन, वो ये दुनिया का हकदार है। वो जो ट्री है, वो इस दुनिया, ये जो ट्री है, जो पेड़ है, वो इस दुनिया को कहते, और उसका हकदार जो है वो सांप, वो शैतान है। And the end result was that humans were also punished for our interaction with the serpent, and we were expelled from the galaxy, from free access to the galaxy, and we were imprisoned on this planet as a result of our interaction with the rulers of this planet. तो हमें भी इसके लिए हमें भी दंड दिया गया, खुदा ने हमें भी दंड दिया हमें, क्योंकि हमने इससे वार्तालाप करी थी शैतान से, वो प्राचीन सांप से। सो ये दुनिया के जो रूलर्स है, उनसे हमने भी बात करी, तो प्राचीन सांप जो है वो उसे तो दंड दिया गया, लेकिन हमें भी दंड दिया गया, हमें यहाँ पे भेज दिया गया इस दुनिया पे, और हमें कैद किया गया क्योंकि हमने गलत किया। And it says that when we were expelled, that God clothed us in these human skins that we now wear as our bodies. और जब हमें निकाला गया आदम की वाटिका से, तो खुदा ने हमें स्किन, जो हमें चमड़ी जो हमारी है, तो हमारे लिए वो फिर वो चमड़ी दी गई हमें, शरीर में
पहनाया हमारे ऊपर, ये इस चमड़ी से पहनाया खुदा ने, हमें क्लोथ किया, हमें कपड़े ये चमड़ी के दिए. And so that is how we came to look like humans. That's how we came to look like apes, because we were put into these bodies, these skins, when we were exiled from freedom in the galaxy and imprisoned on this planet. So we look like the other uncles, our relatives, those other apes who were already on this planet. We could say those other apes were the devas who were on this planet before we came here, and like Hanuman and the monkeys of Rama, they lived here beforehand. They were the people of the serpent, and we were clothed in skins to look like them. So हमें जब भी यहाँ पे भेजा तो ऐसे हमें स्किन में, हमें चमड़ी, हमारे शरीर दे के खुदा ने हमें भेजा यहाँ पे. और यहाँ पे इस हिसाब से हम उसके जैसे कजिन्स, जैसे कि वो जो बंदर हो जाए, ओके, तो ये सारे बंदर के जैसे हमें हम भी दिखने फिर लगे, क्योंकि खुदा ने हमें चमड़ी दी और हमें मांस दिया, ऐसे शरीर पहनाया. तो यहाँ पे लेकिन जब इस दुनिया में भेजा तो यहाँ पे ऑलरेडी वानर पहले से थे, जो होमो सेपियंस के जो कजिन्स थे, हमने जो बात करी उनमें स्टार्टिंग में, तो वैसे दिखने वाले. तो वैसे जो दिखने वाले जो है वो यहाँ पे पहले से थे. यहाँ के रूलर्स जो कि शैतान, जो प्राचीन सांप और उसके लोग थे, वो वैसे था. तो जो हमने जो बात करी जैसे कि हनुमान या फिर राम, जो एक जैसे दिखने वाले या उनके जैसे वार्तालाप करने वाले, तो वैसे लोग थे यहाँ पे पहले. Yeah. So we started to look like Homo habilis, Homo rudolfensis, and all this whole list of other Homo species of man. We started to look like them after we were cast down here from paradise, which is where we used to live. We used to live in Garden of Eden in the galaxy, and we were cast out of there, and we came to live in this planet, and we started to wear the skin of those ape-like human beings. And that's why we share DNA with them, not because we actually descend from them, but because we are clothed inside of their bodies. That's why. But nevertheless, we evolved in a different direction, separate from them. And the location where we came down was in Sumeria. This is where we came down. And according to the Sumerian traditions, it was about 300,000 years ago. सो इसीलिए जब अब खुदा ने हमें आदम की वाटिका से निकाल के हमें यहाँ पे भेजा, तो हमें कपड़े पहनाए ये मांस के और चमड़ी के. और ये जो कारण है, इसी वजह से हमारा जो डीएनए है वो थोड़ा बहुत मिलता है ये जो यहाँ पे वानर थे और उनके जैसा. इसीलिए नहीं कि हम उनसे ही आए हैं, वानर से आए हैं, वैसा नहीं है. खुदा ने हमें ये ऐसा मांस और चमड़ी पहनाई और हमें यहाँ पे भेजा, जो कि इराक साइड पे जो सुमेरियन, जब वहाँ पे स्टार्ट हुआ ये. और इसीलिए हम हमारे जैसे दिखने वाले जो होमो हैबिलिस और ये जो कि पहले से यहाँ इस धरती पे थे. Yes, so the history of real humans on the planet is not as old as the Yuga cycle, but really only begins with the Sumerian history about 300,000 years ago, when humans started to occupy these bodies on this planet. And the species of human actually translate that much. सो हमारा जो इंसान का जो इतिहास है वो एक्चुअली इतना पुराना नहीं जाता जितना ये युगास है, जैसे कि 20 लाख 30 लाख वर्ष पहले. लेकिन यहाँ पे जो सुमेरियन का दिया गया है, जो 2 लाख या 2 लाख 40,000,
two and a half 2500,000 brother, You could say 2400,000 years. it began almost 300,000, almost Yeah, 300,000 years ago. You could say yeah. So 3 लाख, 240,000 years ago. हाँ, सो 2,40,000 से 3 लाख साल वर्ष पहले इंसान जो हम आज है, वैसे उस मांस और शरीर में खुदा ने जो ऐसा भेजा हमें आदम की वाटिका से, तो वहां से हमारी शुरुआत होती है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख साल के आसपास से, ना कि 30 वर्ष पहले, जो कि यहाँ पे दुनिया में ऑलरेडी होमो हैबिलिस और ये सारे लोग जो एप्स थे, जो वानर थे, जो पहले से थे यहाँ पे. Yeah, I'm having trouble trying to show here, but the time before present, when the Homo sapiens, when humans began, is given here is about 300,000 years before present. That's what KYA means. It means 1,000 years before present. So 300,000 years before present, which is roughly about the right time for the beginning of the Sumerian traditions. So humans and Sumerians records are coinciding. हाँ, सो जो होमोसेपियंस, जो कि हमारा नाम, हमारा टेक्निकल साइंटिफिक टर्म जो है हमारे लिए जो दिया गया है, वो होमोसेपियंस का भी शुरुआत अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि 300, जो कि 300 साल नहीं है, ये एक्चुअली KYA जो कि होता है 1 लाख. सो ये 3 लाख वर्ष पहले से हम पाए जाए हैं पूरी दुनिया में. Which is the beginning of the Sumerian civilization, हाँ, according to Sumerian records, according to their own हाँ, records. जो कि साइंटिफिकली भी होमोसेपियंस का 3 लाख वर्ष पहले है, और सुमेरियन लोगों का भी लिखावट के हिसाब से ये 3 लाख है, जो कि दोनों का मैच हो रहा है. होमोसेपियंस मतलब ये साइंटिफिकली भी, और जो सुमेरी लोगों ने लिखा है 3 लाख वर्ष पहले, दोनों मैच हो रहा है. And then the Bible also has some interesting information about this. After we came down here, it says that the next thing in chapter 4, again, we have no time given in the Bible for this. There's no time in chapter 4. But it says in chapter 4 that there were two brothers, two related tribes, if you like. This is a symbolic language, Cain and Abel, who were descended from these humans who had come down to this planet. Two types of human, Cain and Abel, and that the Cain humans killed the Abel humans. That is very much like the story between Homo sapiens and Neanderthals. Neanderthals also have their origin a little bit less than Homo sapiens. They are our younger brothers, if you like. They existed 240,000 years ago. But they were only on the planet until 40,000 years ago, and then they were eradicated. The explanation is usually given that humans killed them. That we hunted them and went to war against them and killed them out of existence. We were in competition with them. They were eating the food that we wanted to eat, so we killed them, and we killed everybody, every other kind of human on the planet, all of our relatives. We killed them all until only Homo sapiens survived. सो जैसे कि उत्पत्ति के चौथे अध्याय में, जेनेसिस की बुक जो है, उसमें भी लिखा है, बट समय का कुछ व्याकरण नहीं है इसमें, कि यहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं, एक केन और एक आबिल, काइन और आबिल. तो वो 2 तरीके के लोग एक्चुअली 2 तरह की प्रजाति के बारे में बता रहे हैं. सो हम जो इंसानों ने हमेशा जो भी कम्पीट करता है खाने को लेके, और वैसे तो हमने उनको जो नियंडरथल्स को भी हमने मार दिया, जिस हिसाब से उत्पत्ति में लिखा है कि इनने आबिल को मार दिया, वैसे ही हमने भी एक हिसाब से नियंडरथल्स को मारा है, क्योंकि खाने को लेके, क्या क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनको जो सेम खाना था, हमारा खाना सेम था, तो हमने उनको भी मारा. और ऐसे तरीके से जो भी तरह के इंसानी प्रजाति था हमारे अलावा, तो हमने उनको एक्चुअली मारा है ताकि हम सरवाइव कर सके. So we killed them all.
We killed all of our competitors, every kind of human-like species on the planet. That's why we don't hear about anything except Homo sapiens today. सो हमने एक्चुअली हमारे अलावा जो भी हमने इन सबको एक्चुअली खत्म किया है, मारा है, हमारे कंपिटिटर्स हो, तो इसलिए हम होमोसेपियंस के अलावा दूसरे आजकल सुनते भी नहीं है, सिर्फ स्केलेटन्स ही उनके मिलते हैं और कुछ नहीं. And this conquest of the planet is supposed to have begun in Iraq, in Assyria, in the place of the Ashuras. So if you were one of the devas on the planet, you would consider that the people of Assyria, of Sumeria, to be very dangerous. They were basically coming out of that land and taking over the world and killing everybody who was different. They even killed their own relatives, the Neanderthals. So they killed everybody who was not they killed everybody who was competing with them and who wasn't part of their way of doing things. This is how humans' civilization took over the world and displaced the devas. सो अगर आप देवास के लोग में से हो, तो आप अशुरा, जो अहुरा, द लैंड ऑफ अहुरा, अशुरा, उन लोगों को आप ऐसा देखोगे कि इन्होंने सबको, मतलब किसी को छोड़ा नहीं है, जो भी कंपिटिटर है उनको सबको खत्म कर दिया, सबको मार दिया. तो कि एक ही तरह के होमोसेपियंस तरह के ही लोग जो कि हम हैं आज, वैसे लोग हम रहे. तो बाकी जो देवा साइड के लोग हैं उनको ऐसा लगे कि ये गलत है करके. That's how we took over. Now, somehow, interestingly, some of the humans who ended up living in India, even though they descend from the same Assyrian, Sumerian human beings, Homo sapiens, they somehow, maybe out of a sense of guilt, they somehow started to preserve the stories of the devas, the other apes who lived on the planet before humans came. सो इस हिसाब से हमने सबको कॉन्कर किया, सबके ऊपर हमने जीत हासिल करी. तो जो देवास के यहाँ पे, जो इंडिया में, भारत के देश में, जो कि अगर कुछ जो लोग हैं जो कि खुद होमोसेपियन से डिसेंड होते हैं, होमोसेपियन से ही वो आ रहे हैं, जैसे कि सारी पूरी दुनिया, बट उनको ऐसा गिल्ट या एक बुरा लगने के कारण कि हमने होमो हैबिलिस हो या ये सारे जो पूरा जो रेंज है, मैंने आपको दिखाया था थोड़े समय पहले, आप स्टार्टिंग में भी जाके देख सकते हो. तो ये जो भी रेंज है, उन सारे एप्स को हमने खत्म किया है. तो वो गिल्ट की वजह से हम असुरा को ही आज बुरा बोल रहे हैं, जो कि असुरा ने भी गलत किया है, वैसे पूरी तरह से सही तो नहीं है, बट हम होमोसेपियन से डिसेंड हुए हैं एक्चुअली में, ना कि जो कि 20-30 लाख वर्ष पहले होमो हैबिलिस से हम नहीं डिसेंड हुए हैं. हमने उनको मारा तो हमें हो सकता है गिल्ट कि हमने उनको खत्म कर दिया है. तो अशुरास गलत है, जो कि हम भी एक हिसाब से वहीं से आए हैं, होमोसेपियंस, जो कि अशुरा, लैंड ऑफ अहुरा, जो कि 2.5 लाख ईयर्स, 2,50,000 से 3 लाख वर्ष पहले. And that's fair enough, because the humans, until the Hebrew religion began about 6 or 7,000 years ago, the humans of Sumeria were very much like demons. They were murderous and cruel. So it's understandable that some of the humans might feel guilty and might start to try and preserve the stories of the ape men who existed on the planet before humans took over. तो ये जाहिर है कि अगर हमें या भारत में या किधर भी कुछ लोगों को अगर लगे कि अहुरा, जो अशुरा गलत थे, तो हमें अपराधी लगे या दोषी लगे, तो वो भी
गलत नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि हिब्रू जो हिब्री धर्म जो हिब्री धर्म 7,000 या 6,000 साल पहले शुरू होने के भी पहले, जब भी सुमेरी लोग थे, तो वो एकदम सही उनका बर्ताव नहीं था। वो भी मर्डरर्स थे, मारने मतलब एक दूसरे को मारते थे। उनका स्वभाव सही नहीं था। तो बाकी लोगों को, दुनिया के बाकी लोगों को अगर ये अशुरा के लोग, इराक के लोग अगर सही नहीं लगते तो वो भी गलत नहीं था, क्योंकि वो लोग भी मर्डरर्स ही थे एक हिसाब से, अशुरा के लोग। वो तो जब हिब्री धर्म आया 7,000 साल पहले, उसमें एक चेंज आया, तो उस हिसाब से हम आगे बात करेंगे अब। So Cain rose up against his brother Abel, that's the Neanderthals, and killed him. And what happened next was that among the humans, some of them started to feel sorry. They repented. They felt sad about what they did. It says in the Bible, and Cain prayed to the Lord, "My punishment is greater than I can bear. Behold, this day have you driven me from the face of the earth, and from your face I will be hidden. I will be a fugitive and a wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me." So the humans, some humans, not all humans, but some humans started to feel very sorry about what they had done and about how difficult life had become as a result of killing and eradicating their brothers and, of course, the other humans on the planet. The other, I should say, ape men on the planet. सो जब काइन ने आबेल को मारा, क्योंकि काइन ने नियांडरथल को मारा, तो उनमें से कुछ लोगों को बहुत दोषी, मतलब उन्हें बहुत बुरा लगा कि हमने गलत किया है करके। तो बाइबल में भी ये चौथे अध्याय में उत्पत्ति के इसके बारे में लिखा गया है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ जो लोग थे, उन्होंने उस चीज का प्रायश्चित किया कि हमने गलत किया। अब जीवन जो है दुनिया में बहुत और कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमने सबको मतलब नियंडरथाल्स को मार दिया, दूसरी प्रजाति वालों को हमने खत्म कर दिया, मार दिया। At the same time, our Jewish sages teach us that while Cain was repenting, the other humans, Adam, was not repenting, but was going and was taking wives from the devas, from the other creatures. We call them Lilith, the daughters of such people. We call them Lilith. He was taking wives from them, and he was having children with them, and these were demons. We understand. So the idea of Ashura being associated with demons is also true according to the biblical and Judaic tradition. ओके, सो एक हिसाब से देखी जाए तो इवन जो यहूदी संत और ऋषि है, उनके हिसाब से भी जो आदम जो था, वो उसने प्रायश्चित नहीं किया। सो उसने प्रायश्चित तो किया नहीं, लेकिन केन ने कुछ लोगों ने किया, जो थे केनाइट्स, जो उन लोगों ने किया प्रायश्चित। लेकिन जो आदम जो था, उसने नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया कि जो देवास है उनमें से उसने कुछ कईयों को अपने लिए वाइफ बनाया और बच्चे किए। और उसमें से हम कहते हैं लिलिल्स करके जो क्रिएशन हुआ पैदा। And it says in our Bible that the Lord saw the wickedness of man was great upon the earth, and that every inclination of the thoughts of his heart was altogether evil all the time. And the Lord regretted that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. So we know that he was very wicked at that time, if you want to translate that passage. सो जो आदम था वो बहुत बहुत बुरा था वो। और क्या हुआ कि जो गलत चीजें है पूरी दुनिया में और बढ़ते गई, और इंसान के जो हर एक ख्यालात थे, उसकी हर एक अंदर की इच्छा और ख्याल, सब कुछ बुरा ही आ रहा था हमेशा दिल से उनके। तो खुदा को रिग्रेट हुआ फील एकदम, कि क्यों उन्होंने इंसान को
को दुनिया में बनाया और उसका दिल जो है वो थोड़ा सा उदास हो गया खुदा का कि इतना पाप तभी बढ़ चुका था. All right. Now, among those repentant children of Cain, we understand that there was a change. So we've mentioned at the beginning of this show that the religion, in order to survive the Kali Yuga, is the Hebrew religion. And the Hebrew religion began just before the Kali Yuga began. It sort of got a head start before the Kali Yuga began because of the wickedness of mankind. So a revelation came to the repentant children of Cain, the children of Cain who were repentant, and they had a revelation about something very deep, which is our religion, which concerns the original nature of mankind as we were intended to be, holy, and this is called Adam Kadmon, and also our ultimate mother of mankind, meaning a kind of a kingdom of heaven. So the original nature of mankind is Adam Kadmon, and the kingdom of heaven is our mother, and that if we are able to perfect the behavior that is expected of us, then we can return to our heavenly kingdom, and that requires us to be like our Father in heaven, our heavenly Father, which is the Adam Kadmon. So if we become like Adam Kadmon and are born again, born of our heavenly mother, the New Jerusalem, we call her, the heavenly kingdom, then we can gain a place, we can return to our place in heaven, and we can escape the worst time of the Kali Yuga. So, जैसे मैंने आपको बहुत ही शुरुआत में कहा था कि अगर आपको कलियुगा जो है ये समय से बचना है तो आपको हिब्री धर्म अपनाना चाहिए. जो हिब्री धर्म यहूदी धर्म है जो कि बहुत सिंपल इस हिसाब से है कि जो आदम कडमोन जो है ओके जो कि हमारे स्वर्गीय पिता जैसा, तो हम उसके जैसे तौर तरीके उसके जैसे एटीट्यूड अपनाने चाहिए. और जो हमारा गोल है जो हमारा लाइफ में कि स्वर्ग की तरफ जो कि हमारी माँ है, तो स्वर्ग जो हमारी माँ है जो कि यरूशलेम हमें जो कहते हैं, तो हमें उसको अपनाना चाहिए. जैसे कि केनाइट जैसे कि उन्होंने प्रायश्चित किया, तो हमें भी अभी स्वर्ग से जन्म लेना चाहिए अभी कि बॉर्न फ्रॉम अबव स्वर्गीय यरूशलेम से जन्मे और हमारा गोल उसकी तरफ जाना है कि ये दुनिया हमेशा के लिए हमारे लिए नहीं है बल्कि हमें जाना है स्वर्ग में आदम कडमोन जो हमारे पिता जो स्वर्गीय पिता है उसके पास. And so this revelation happened in Samaria again, when the Sumerians had become very, very wicked. The revelation of Adam Kadmon and our heavenly mother, Jerusalem, the New Jerusalem, the heavenly kingdom. This revelation happened in Samaria. So ये जो प्रकाशीकरण है ये समेरिया में भी आया बहुत सालों पहले, ये करप्ट होने के पहले, समेरिया करप्ट होने के पहले. और ये हम जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बाइबल में भी कुछ चीजें और समेरिया में भी सेम है. तो ये प्रकाशीकरण आया था समेरिया में बहुत सालों पहले. Now we don't have a record in the Sumerian tradition of when exactly it happened, but it certainly happened before the rule of somebody called Meshkiangasher of Eanna. It was before his rule, because this king Meshkiangasher of Eanna, his kingdom was when the flood of Noah happened. The flood of Noah destroyed
the Sumerian civilization as we know it, and the Sumerian civilization had to recover. And that happened, that flood of Noah happened again just before the Kali Yuga began, about 6,000 years ago. So the biblical story of how the humans on the planet became a new kind of human, became religious and believers in God and preparing to escape the Kali Yuga. It begins in chapter 5 of the book of Genesis, when Adam Kadmon begins to bring forth children on this planet, meaning spiritual children, religious children. And that's about 6,000 years ago. It happens in chapter 5 of the book of Genesis. Yeah. And it ends So with the culmination is the destruction of Sumeria with the flood of Noah. सो यहाँ पे जो ये जो प्रकाशितकरण जब मिला था, तो ये जो मेष की एंगेशर जो है, ये राजा के पहले ही ये हुआ था, क्योंकि ये राजा के बाद पूरी दुनिया, मतलब ये जो वो इराक साइड है, जो कि सुमेरी लोग, वहां पे जो कि अशुर, तो वो जो लोग हैं वहां पे खुदा ने फिर खुदा ने बाढ़ लाई यहाँ पे और उन लोगों को खत्म किया, क्योंकि और उसके बाद जो आदम काडमोन जो है वहां से 6000 साल पहले, 6 या 7000 साल पहले, तो डिपेंड करता है कैसे डेट और गणित बैठा है, तो ये जो 6-7 हजार साल पहले आदम काडमोन से फिर आत्मिक बच्चे आने शुरू हुए और इस दुनिया में अच्छाई के लिए जो कि थोड़ा वापस से उसका प्रकाशीकरण वापस से आना शुरू हुआ, और जो कि बाइबल में उत्पत्ति के 5वें अध्याय में ये सारी चीजें ये लिखी है. And so the story of the biblical religion begins in chapter 5 of Genesis. So now you understand that the history of the biblical religion beginning in chapter 5 of Genesis is a very long time after chapter 1 of Genesis and chapter 2 of Genesis, chapter 3. All of those chapters, we have no time. We don't know how long it lasted. But we do have the Sumerian records which help us. We do have the scientific data concerning the origin of the human species, the Homo sapiens, which helps us. And we do also have enough to prove that there is some truth in the Hindu stories about Hanuman and these devas who existed on the earth before humans came and eliminated them. तो ये जो चीजें हैं जो कि उत्पत्ति का 1 से 2, 3, 4, इन सब में कितने दिन हुए हैं, कितने साल हुए हैं, लाखों साल, कुछ हमें इतना इसके बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ सच्चाई के जो चीजें हैं वो इसमें भी हमने देखा. अशुर जो कि इराक में सुमेरी लोगों के रिलीजन में, और कुछ जो कि हमने इस हिंदुइज्म में भी देखा, जो कि 20-30 लाख साल पहले जबकि वानर लोग यहाँ पे थे पहले से, जो कि शैतान के लोग जो कि इस दुनिया पर पहले से थे, उनके बारे में भी हमने देखा, और अब हम देखेंगे आगे और क्या है. Right. So some of the stories of the Hebrew religion descending from Adam Kadmon, which started 6,000 years ago, started to spread around the world and even reached the India and the people who were preserving the stories of the devas. And some of these stories get mixed up into the Hindu records. For example, the story of Manu, who is basically Noah, it gets mixed up in there. And there is some more of the Hebrew story which gets mixed up in the Hindu story as well. I'm going to explain now more of how the Hebrew stories get mixed up into the Hindu stories as the religion for the Kali Yuga spreads around the planet
because we are trying to save everybody from the destruction which is going to come in this Kali Yuga. So ये जो इस हिसाब से जो just a second. तो इस हिसाब से जो चीजें हुई जो कि हिंदुइज्म में जैसा हुआ कि 7,000 जैसे कि मैंने जो हिब्री धर्म के बारे में कहा कि जो आदम कदमोन जो हमारे हमारे आत्मिक पिता जैसे है। अब जो 7,000 साल पहले जब उसकी हिब्री धर्म की बातें इस दुनिया पर आई, तो वो सारी चीजें फिर पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलने लगी। जब धीरे धीरे फैलने लगी तो भारत देश में भी इसके बारे में इसका जिक्र हुआ, इसे सिखाया गया। तो इसीलिए अगर आप देखोगे हिंदुइज्म में भी कुछ कुछ चीजें मिक्स है, कुछ कुछ चीजें पूरी तरह से मिक्स हो जाती है और उसमें हमें समझ में नहीं आता कि क्या है, मतलब क्योंकि देवास के जो 20-30 लाख पहले वानरों का उन सब का भी व्याकरण है, उसमें भी पता है। लेकिन नोआ जो मानो, जो कि हमारे हिंदुइज्म में अगर आप देखोगे मानो की एक कहानी है जो कि बिल्कुल नोआ की कहानी से सेम है। सो ये चीजें हो जाए और भी काफी चीजें हैं जो कि पूरी तरह से बहुत सेम है, जो कि आदम कादमोन के द्वारा जो 6-7 हजार साल पहले हिब्री धर्म ने पूरी दुनिया में बांटा। Very good. So another example later on after Noah is the story of Abraham, a descendant of Noah who continues the religion of Adam Kadmon, trying to spread the information around the world, is somebody called Abraham. Abraham himself had grown up in more of a Hindu religion. He was grown up in that religion because his great grandfather was an apostate, was somebody who had turned away from the Hebrew religion and had embraced paganism, had embraced the gods and the devas and things like that. So Abraham grew up in that faith, but as an adult, he left behind his home country in Sumeria. He left his family, and he moved to the West, and he started to learn about the truth of the story of Noah, not following the pagan version of the story of Noah, though not the confused or mixed up version of the story of Noah, but wanting to find the truth of the story of Noah. And so he moved to the West, to the area we call Palestine and Israel, Jerusalem, and he started to study in a school which is called the Yeshiva of Shem's Yeshiva. And in this school, he learned the truth about Noah and the 7 laws of Noah, which is the basis of human civilization. So Abraham came from this Sumeria. land. Yeah, he came from Sumeria. Yeah. सो अब्राहम भी जो है वो सुमेरिया के वहां से ही, लेकिन उनका जो धार्मिक जहाँ से वो आए वो भी हिंदू के जैसा ही था, मूर्ति पूजा और ये सारी चीजों का। लेकिन जो उन्होंने अब्राहम ने जब भी जानने की कोशिश करी चीजों के बारे में, खुदा के बारे में, जो कि आदम कादमोन के ही धर्म से 7,000-6,000 साल उनके ही वो थे शिष्य। तो जब उन्होंने जानने की कोशिश करी ये सारी चीजें, तो वो थोड़ा उस तरफ देख जाते गए, नोआ का जहाँ पे सुमेरिया में जहाँ पे ये सब हुआ था, बाढ़ आई थी इराक में, तो वो उन्होंने वही सब जानने की कोशिश की, सब समझने की कोशिश की। वहाँ उन्होंने यशीवा में सीखा, यशीवा एक स्कूल है, तो वो जो स्कूल में उन्होंने सीखा खुदा के बारे में, उसे यशीवा ऑफ शेम कहते हैं, शेम का। तो जो शेम है वो भी एक नोआ के लाइन से है, अब्राहम भी वही लाइन से है, नोआ के लाइन से। तो उन्होंने वो खुदा के बारे में जानना और सीखा। We often talk about the God of Abraham, Isaac, and Jacob, Abraham, Isaac, and Jacob, Abraham, Isaac, and Jacob. And the name Abraham and the revelation he gives us about the God
the invisible God, is very important because this also ends up in Hinduism as well. The story of Abraham, Isaac, and Jacob gets confused, and Abraham becomes Brahman, which is almost three people: Abraham, Isaac, and Jacob, always mixed up there. And the God that Brahma introduces you to is Brahman, and Brahman is exactly the description of God that Abraham has given us in our Hebrew religion, that he is invisible, he is the fundamental principle of all of the universe, etc. This is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So you've got Brahman and Brahma, and you have the children of Abraham, the Brahmins. We have them too. The descendants of Abraham are the priests who try to teach everybody about the truth of God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And then you also have the wife of Abraham, who is Sarah, the wife of Abraham, which is taken into Hinduism as Saraswati, the wife of Brahma. So you've got a lot of things like this coming off into Hindu religion as the Hebrew religion is trying to prepare the people of India in order to survive the Kali Yuga. सो ये जो अगर हम देखेंगे कि हिब्रू धर्म में भी हम कहते हैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का जो खुदा है, अब वही अगर आप देखेंगे तो हिंदुइज्म में जो कि ब्रह्मा है जिसके 3 सिर है, तो ये थोड़ा यहाँ पे मिक्स अप हो जाता है। और जो अब्राहम ने सीखा यशीवा में और जो समझा और जो सिखाया सब लोगों को, जो कि कुछ चीज़ें उसकी हिंदुइज्म में भी है, जैसे कि खुदा जो है, जो अदृश्य खुदा है, जो देखा नहीं जा सकता, और जो कि मौलिक चीज़ है, जो मौलिक है, मतलब नींव, जिसका नींव है कि ये हिब्रू धर्म में भी, यहूदी धर्म में भी, कि खुदा जो है वो किसी फॉर्म में नहीं है, किसी खुदा जो है उसका ऐसा शरीर या आंखें या हाथ नहीं है, वो उन सबके परे है, सबके आगे है। तो ये जो चीज़ें हैं सिखाई वो गई, काफ़ी चीज़ें हिंदुइज्म में भी सारी चीज़ें हैं, और यहूदी धर्म में तो ये चीज़ का नींव है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल नींव, जिसका मौलिक चीज़ है ये, कि ये चीज़ इस हिसाब से है, जो कि हम देख सकते हैं अब्राहम की जो बीवी थे, उनके वाइफ जो कि सारा, उसका भी हिंदुइज्म में एक तरह से थोड़ा बहुत व्याकरण इस हिसाब से है कि जो ब्रह्मा है इज लाइक एन अब्राहम, जो ब्राह्मण है उसे कहते हैं लाइक अ गॉड, ब्राह्मण द अल्टीमेट रियलिटी, जो खुदा। और जो सरस्वती है लाइक द वाइफ सारा, जो इनके वाइफ अब्राहम के जो वाइफ थे सारा। सो ये सारी चीजें बहुत मिलती जुलती है। Yeah. और जो जस्ट अ सेकंड, और जो यहूदी है, ब्राह्मण्स, जो कि प्रीस्ट कहते हैं, जिसे हम जो संत होते हैं, जो कि खुदा के बारे में जो सिखाते हैं, तो वो भी बहुत सिमिलर है, बहुत मेल जुल है उस चीजों में। Mm-hmm. Mm-hmm. Who are essentially the children of Abraham, or the children of Brahma, really, continuing the priesthood of Abraham until the present day. So you've Yes. got the influence of the Hebrew religion coming into India, trying to help the Indians prepare for the Kali Yuga, because the Indians are essentially nice people. They felt guilty about the evil behavior of the humans against all of the other ape men on the planet. They had mercy inside of their heart. They had gentleness inside of their heart, and they didn't want to be so aggressive and cruel. But the problem is, you can't start your religion because you feel guilty and start following the religion of the monkeys. Just because you feel guilty that we killed all the monkeys and you want to preserve the story of the monkeys,
and now you're going to start to have the religion of the monkeys. You can't do that because you feel guilty about being a human. That is the origin of the Hindu religion. The origin of the Hindu religion is basically humans felt guilty about being humans and started to believe and follow the stories of the monkeys that they had killed, that we humans had killed. But that's not a good reason to have a religion. Sure, we should feel sad. We should not be violent. We should not be aggressive. We should feel that that was the wrong thing to do, but we shouldn't start worshipping the people we killed as gods. And we shouldn't start following their stories as if their stories are our stories. Their stories are not our stories. They are our victims, and we should not worship them as our gods. हाँ, सो यही जो पूरी तरह से हमने अभी सीखा, पूरा बताया मैंने कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पहले भी इस दुनिया में जैसे कि हमारे जैसे वो एप्स जैसे दिखने वाले वानर जैसे लोग थे, और जो हमारे होमोसेपियन जो हम लोग थे, हम लोगों को जो कुछ भारत में जो लोग थे, हिंदू लोग थे, उन्हें दोषी जैसा लगा कि हमने इनको मारा, जो कि सही बात है कि हमने इतना वायलेंट नहीं होना चाहिए कि हम सबको मार रहे हैं। ये लेकिन ये कोई कारण नहीं है कि हम एक ऐसा धर्म शुरू करें कि हमने जिनको मार दिया, हमारे पहले जो वानर जैसे हमारे जैसे जो लोग थे, हमारे कजिन जैसे इंसान जैसे लोग को हमने मारा, तो हमें हमें बहुत बुरा लगे या दोषी जैसा लगे, गिल्ट लगे, तो हमने फिर उन्हीं की हिस्ट्री को अपना हिस्ट्री बना दिया और उन्हीं को हम पूजने लगे। तो ये जो है वो गलत है। ये कोई कारण नहीं है कि एक धर्म हम बनाए कि हम उन्हें ही पूजने लग जाए। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं कि हमें वायलेंट नहीं होना चाहिए, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, हमें शांति से रहना चाहिए इस धरती पर। लेकिन हमें इस चीज़ का बुरा लगे या हमको ऐसा लगे कि हम दोषी हैं, तो हम फिर उन लोगों का हिस्ट्री अपनाएं, उनका इतिहास अपनाएं, और हम वो गलत है, ये सारी चीज़ें गलत है। And it's even worse than just simply taking the stories of the monkey victims, turning the monkey victims into our gods and taking their stories as our religion. But even worse than that, you're mixing up the truth of the religion, which is to save us from the Kali Yuga, and you're taking elements of this and mixing it with the Hindu stories, and you're creating a very strange, we can call synthetic or syncretic religion, which is mixing elements of the Hebrew faith, Abraham, Sarah, the children of Abraham, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, mixing the story of Noah, mixing it with these stories of the monkey humans, the ape men, and how the war existed between Assyria and the Devas, mixing it together and creating a very confused religion. What you need to do is you need to have everything in its right place, and I hope that there will be some Hindus out there who will come and ask, how do we put this all into the correct place? Hopefully some Hindus out there have recognized that their Brahmins don't seem to be very educated about everything sometimes, and they maybe want to see the bigger picture. So I would like to invite you to come and contact me to learn about the bigger picture. तो ये हमें समझना चाहिए कि ये तो बुरा है कि हमने ये सारी चीज़ें, हमें दोषी फील हुआ तो हमने अपना लिया ये सारी चीज़ें, और इससे ज़्यादा बुरा ये है कि हम इसे अपना ही इतिहास माने और यही सारी सच्चाई है ऐसा सोच के चले, और इसे हम पूजना शुरू करें, इसे हम
खुदा कहकर इसे हम आराधना करें, ये सब गलत है। क्योंकि क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि अम, हमें सब कुछ नहीं पता, पहली बात तो। और हम कुछ हिंदूज ऐसे हो कि वो सारी चीज़ें को सवाल करे, क्वेश्चन करे कि ये सब कुछ मिक्स है, क्योंकि ये कुछ कुछ अब्राहमिक विश्वास की चीज़ें हैं कि खुदा अदृश्य है, खुदा अ, ऐसे वानर तो नहीं हो सकते, ना ही ऐसे हो सकते हैं ये सारी चीजें। खुदा तो अदृश्य है, वो तो सबसे परे है। तो ये सारी मिक्स चीजें हैं। तो कोई हिंदूज अगर हो जो ऐसे सवाल या क्वेश्चन करे, तो अगर और ऐसा समझे और ऐसा माने कि अपने आप से ऑनेस्ट रह के ऐसा बोले कि नहीं, कि ब्राह्मण को भी सब कुछ नहीं पता। हमें बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर देखना चाहते हैं। अगर हम बड़ी चीज अगर हम देखना चाहते हैं कि पूरी पिक्चर क्या है, ये सब पुराने 20-30 लाख साल पहले का भी, अभी का, सुमेरिया का, अभी का, क्या क्या है ये सब चीजें। तो आप बेझिझक होके मुझे कांटेक्ट कीजिए इस चैनल पे। मेरा नाम हकम जो है, योसी जो। तो आप मुझे प्लीज कांटेक्ट कीजिए अगर आपको और कुछ जानना है ये सारी चीज। Thank you. So we should also just say, I think the last thing is this, we should probably add it to mention. At the end of the day, you are, whether you know it or not, many of you descended from Abraham. There's a story we have in our Bible which says that Abraham had another wife called Keturah, not just Sarah, but another wife called Keturah, and she had several children: Zimram, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. And Abraham left everything he owned to Isaac, who was his child with Sarah. But while he was still alive, Abraham gave gifts to the sons of his concubines and sent them away from his son Isaac to the land of the east. And there you have it, the land of the east. As a result, there are things even in your culture today which preserve Hebraic tradition. You mentioned some earlier. You can add them and explain those, please, for me. Can you, Shalom? यस यस ब्रदर। Thank you. सो ये सारी चीजें हैं। अगर आप देखिएगा उत्पत्ति किताब के 25वें अध्याय, जेनेसिस, हाँ, 25वें अध्याय में भी लिखा है कि अब्राहम ने, उसकी एक और वाइफ थी केटूरा, तो उसमें से उनके जो भी ये सारे बच्चे थे, जिम्रान, जोक्शान, मेडान, मिडियान, इश्बाक और शुआ, और ये सारे जो बच्चे थे अब्राहम के, उसने उन सबको गिफ्ट दिए और उसे ईस्ट की तरफ भेजा। ओके, सो ईस्ट की तरफ भेजा। सो बहुत सारी चीजें जो है इब्राहिम, ब्राह्मण बहुत सेम है, इब्राहिम, ब्रह्मा, और ये सारी चीजें जो अपने बच्चों को उसने बहुत कुछ सिखा के ईस्ट की तरफ भेजा। तो अगर आप देखेंगे आज भी हिंदुइज्म में बहुत सारे ट्रेडिशंस भी, अगर आप खुद आप जाके बाद में चेक कर सकते हैं, बहुत सारे सेम है। हम जो जो ये सारी चीजें हैं कि एक एक हिसाब से अगर हम देखेंगे पुराने एंशिएंट इंडिया में, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में ऐसे पॉन्ड्स होते थे छोटे छोटे। मंदिर में जाने के पहले आपको डुबकी लगानी है, फिर आप मंदिर में जाएंगे, जो कि आज भी यहूदी लोग करते हैं, जिसे मिकवा कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी सिमिलर सिमिलर चीजें हैं। इवन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पूरा जो फ्लड हुए हैं मनु और नोआ का सेम है एक हिसाब से। फिर जैसे कि ब्राह्मण्स जो है, वो लोग भी ये बिलीव करते हैं कि, वो लोग भी ये विश्वास करते हैं कि वो के चुने हुए लोग हैं, जो कि यहूदी भी यही वो कहते हैं, यहूदा लोग भी अपने आप को कहते हैं वैसा। फिर आप देखोगे कि काऊ, जो कि गाय को लेके भी एक अच्छा चीज मानना कि हाँ, गाय एक अच्छी चीज एक है एक हिसाब से, जो कि बहुत वो भी सिमिलर है।
फिर ऐसा कहा गया है हिंदू को भी दिन में 3 बार प्रार्थना करनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे काफ़ी आपको सिमिलर चीज़ें मिल जाएगी जो त्रिकाल त्रिकाल संध्या करके है, त्रिकाल संध्या। सो ये 3 श्लोका है। तो एक है आपको जब उठोगे आप तो आपको पढ़ना चाहिए, फिर खाने के पहले और सोने के पहले 3 टाइम्स। इवन द जूस जो है वो लोग भी दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। तो ऐसी काफ़ी और गुरु शिष्य परंपरा जो कि यहूदियों में भी बहुत माना जाता है, जो कि हम हिंदुओं में भी है वैसा। ये सारी बहुत सिमिलर चीज़ें हैं, आप खुद भी और देख सकते हैं इसमें। Yes. So thank you. And there's more you can read. I'm just showing you an example from Kabbalah Online where you can read about the relationship between Abraham and Brahma more. And you can see some more detailed, interesting connections with India and or Hinduism and the Abrahamic faith. Now, I'll just make it clear one more thing before we go. We're not asking you to convert to become Jews. We don't want you to become Jews. Judaism never has a mission to make more Jews out of people on the planet. But we do want you to become Noahides. That means to keep the 7 laws of Noah. And that is what we call Noahide Judaism. That is the only thing that Judaism ever really wants to promote anywhere around the world. We want to promote Noahide Judaism. We want you to become Noahides. But don't think to yourself, great, I'm a descendant of Abraham. I'm going to convert to Judaism. I'm going to get circumcised and I'm going to move to Israel. That's not what we want. We never wanted that. But our sages, even in Josephus, tells us that in India, that you are basically good people who had a relationship to us, and that relationship should be the way of Noah, or the way of Manu, if you want to use the Hindu name for him. And that is the 7 laws of Noah, the Sheva Mitzvot. Don't kill, don't steal, don't commit idolatry, don't blaspheme, don't be sexually immoral, don't be cruel to animals, and don't be unjust. That's the Sheva Mitzvot. That's the 7 laws of Noah. And that's what we would like to encourage you to do. That is the Judaism which applies to you, the nations. So if you're interested, please get in touch. Yes. So एक और आर्टिकल भी है कबाला ऑनलाइन, तो उस पे भी आप देख सकते पढ़ सकते हो इब्राहिम और ब्रह्मा, जो ये चीज़ों का कनेक्शन। और आपसे आपसे हम ये कोई अनुरोध नहीं कर रहे या कि आपको यहूदी बनना चाहिए, कि आपको इज़राइल आना चाहिए और जीना चाहिए, खतना करना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ। आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 7 जो लॉ है, 7 नियम है, तो 9 के 7 कानून जो है, जिसमें मूर्ति पूजा को मनाही है, ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना है, और यौन अनैतिकता नहीं, चोरी नहीं, जीवित जानवर का मांस फाड़कर खाना नहीं, और साथ ही न्याय के अदालतों पर स्थापित करना का दायित्व शामिल है। तो ये जो 7 तरीके के नो का जो कानून है, आप किधर भी, कोई भी यहूदी आपको ये नहीं कहता कि आप भी यहूदी बनो और आप भी यहूदी बन के खतना करके इज़राइल आ जाओ, और ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 7 नियम जो है, 7 कानून जो है नो के, उसे आपको मानना है। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप कोई भी हो, तो आपको इसको मानना चाहिए और इसमें आपको अपना जीवित इसके ऊपर निर्धारित करना चाहिए, इसके आसपास आपका जीवन आपको बनाना चाहिए। और अगर आपको और जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको और बताऊंगा इस सारी चीज़ों को लेके। Thank you so much for your help, brother. Thank you for having me, brother. So God bless you all. Take care and shalom.